Morning students, today I am going to start chapter number 13 hydrocarbons part 1. And first of all, what are hydrocarbons? Hydrocarbons are the organic compounds of carbon and hydrogen like alkane, alkenes, alkynes and the benzene etc. Now, classification of hydrocarbons. Hydrocarbons are of two type. दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, open chain compounds and cyclic compounds. The open chain compounds, they are also called aliphatic compounds and they are also of two type. One, saturated hydrocarbons and they are known as alkanes, and the general formula for alkanes is CnH2n plus 2. And unsaturated hydrocarbons are further divided into two groups, alkenes, and they have carbon-carbon double bond, and the general formula is CnH2n, while and second part is alkynes. They contain carbon-carbon triple bond and the general formula is CnH2n minus 2. And cyclic compounds are also of two types, aromatic compounds, and they, for example, benzene, toluene, etc. And they are further divided into two types, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड. बेंजीनॉइड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग इसेंशियली प्रेजेंट होती है, पर नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग नहीं होती है, बट दे ऑल्सो कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स. एंड सेकेंड वन, द एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, बट दे आर नॉट द अनसेचुरेटेड. And for example, cyclobutane, cyclopropane, cyclohexane, etc. are called the alicyclic compounds. Now we come to alkanes. The alkanes are the saturated hydrocarbons and they are open chain. वो open chain होते हैं and containing carbon-carbon single bond. उसमें कार्बन-कार्बन के बीच में single bond होती है, like methane, ethane, propane, butane, etc. And these hydrocarbons are inert under normal conditions. यानी कि ये normal condition में आसानी से reaction नहीं करती हैं. Hence, they were earlier known as paraffins. Paraffins means कि very little affinity, बहुत कम reactive होते हैं. Alkanes exhibit, ये इसमें chain isomerism and position isomerism and conformational isomerism होती है. Methods of preparation of alkenes from hydrogenation of alkenes and alkynes. When the alkenes and alkynes undergoes hydrogenation, इनका hydrogenation होता है, means the addition of the hydrogen at the double bond in presence of the catalyst like platinum, palladium, nickel, etc. They change into the saturated hydrocarbons, alkenes. Next is by decarboxylation of the sodium or potassium salt of the fatty acids. And जब फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट जो उनको हीट किया जाता है सोडा लाइम के साथ. सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ NaOH and CaO in ratio 3:1 होता है, and the sodium salt of carboxylic acid is converted into alkane. corresponding alkane बनता है, इसमें एक कार्बन एटम कम होता है because कार्बन COO is converted into कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिलेट आयन में निकल जाता है. नेक्स्ट प्रिपरेशन इज बाय वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन में when two molecules of alkyl halide react with sodium metal in presence of diether, the higher alkanes containing the double the number of the alkyl group are formed, and only we can prepare the alkanes having even number of carbon atoms by this method.
वुड्स रिएक्शन में जो एल्केन बनती है उसमें डबल नंबर होता है एल्काइल ग्रुप का, जो हम लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरोमीथेन लेते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज ईथेन। एंड नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। Alkyl halides are the general is Rx. X is any halogen like fluorine, chlorine, bromine, iodine, and R is the alkyl group. So when the alkyl halide is heated with reducing agents like zinc HCl या फिर hydrogen iodide and red phosphorus या hydrogen and palladium and the alkane is formed, alkane बनती है इसमें। नेक्स्ट बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है एंड ऑल्सो जस्ट लाइक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है एंड in this process also the alkane formed containing the double number of the alkyl group, जो भी alkyl group हो, for example sodium ethanoate CH3COONE on electrolysis gives CH3 and ये जो इसकी CO2 है वो in form of carbon dioxide निकल जाती है। Now physical properties of alkanes. Because alkanes also form the homologous series और इसमें जो है molecular mass बढ़ता जाता है सीरीज में and the first 4 members are colorless gas and next 13 members they are colorless liquids and higher members are colorless solids. It can be explained on the basis of the magnitude of the attractive forces. And now boiling point of alkane decreases on branching. ब्रांचिंग होने पर जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होता है अगर उसकी ब्रांचिंग हो जाती है तो उसमें क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स कम हो जाता है एंड ऑल्सो सरफेस एरिया डिक्रीजेज, सो द ब्रांचिंग डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द alkanes. And next one, it is the alkanes with even number of carbon atoms have higher melting point as compared to the next higher or lower alkanes with odd number of the carbon atoms. यानी इवन नंबर वाली alkanes का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एंड जो ऑड नंबर वाली alkanes होती हैं। Next is alkane are being non-polar in nature. Alkanes non-polar होते हैं and so they are insoluble in polar solvents and soluble in non-polar solvents. Non-polar solvents such as the alcohol and benzene etc. Halogenation of alkanes. First is chlorination. The alkane like methane undergoes chlorination in presence of sunlight. सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन होता है इसका एंड वन बाई वन all the 4 hydrogen atoms get substituted by halogen atom Cl atoms and so we get final product is CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन ऑल्सो प्रोसीड इन द सिमिलर मैनर, ऐसे ही ब्रोमिनेशन होता है। एंड आयोडीनेशन it is a reversible process and because iodine is reactive and more reactive, so and its size is larger. The order of reactivity of halogen is fluorine is most reactive and iodine is least. And order of reactivity of the hydrogen of alkanes, जो alkanes के हाइड्रोजन होते हैं उनका reactivity order and the mechanism of the hydrogenation of alkane is
बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंबशन. Due to evolution of large amount of the heat during combustion, alkanes are used as fuels. जो हम लोग घर में LPG को यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पस में, that is mostly the butane, normal butane ये होती है. And on burning the combustion, it gives the heat which we use for the cooking purpose. Now controlled oxidation. अंडर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब है कि अगर हम डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं, दिस इज़ नोन एज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. एंड सो by using the different type of oxidizing agent, the same reactants give different type of products. For example, methane, when under oxidation, when in presence of copper at 523 Kelvin and 100 atmospheric pressure, it gives the methanol. But when these undergo combustion in presence of molybdenum oxide, the methanol is formed. And when ethane undergoes oxidation in presence of manganese acetate, the ethanoic acid is formed. And when we burn the methane in presence of air, the carbon dioxide and water is formed. So different type of products are formed. Next is isomerization. Isomerization means the conversion of one straight chain hydrocarbon into the different type of isomers having the same formula but different structure. And this is carried out in presence of anhydrous aluminum chloride and HCl. And for example, the hexane, normal hexane is converted into 3-methyl pentane and 2-methyl pentane. Next property is aromatization. As the name indicate कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी ओपन चेन, दे अंडरगोज टू फॉर्म द एरोमेटिक कंपाउंड. दिस प्रोसेस इज नोन एज एरोमेटाइजेशन. एंड कम से कम इस एरोमेटाइजेशन के लिए 6 कार्बन से कम वाला हाइड्रोकार्बन यूज नहीं कर सकते हैं. व्हेन नॉर्मल हेक्सेन undergoes aromatization in presence of chromic oxide or vanadium pentaoxide or molybdenum oxide at 773 Kelvin and 1 to 10 to 20 atmospheric pressure, benzene is formed. तब benzene बनती है. Now reaction with steam. Methane on reaction with steam in presence of nickel catalyst on heating is converted into carbon monoxide and hydrogen gas. Pyrolysis. Pyrolysis means the cracking. Pyrolysis is a process of cracking. Cracking का मतलब होता है break down, किसी चीज़ को तोड़ना. And it is very useful reaction for the hydrocarbon in the petrochemical industries. And we run the vehicle with this pyrolysis process. The pyrolysis में जो alkane होता है, it is broken down on heating at different temperature into the lower alkanes and alkenes. इसमें alkynes नहीं बनते हैं and small molecules like hydrogen is also formed. Next property is nitration. The alkanes when treated with nitric acid, the one of the hydrogen gets substituted by nitro group and this process is known as nitration. Sulfonation. Sulfonation is a process in which the alkane, aromatic or aliphatic, they are treated with the concentrated sulfuric acid and sometimes the oleum, and on different temperatures they are converted into the सल्फोनिक एसिड्स, करस्पॉन्डिंग सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट
हो जाती हैं। This is all about for today. Please subscribe my channel Blooming Chemistry, and thank you students for watching the video.